जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 576th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस so yesterday I could not come live because we had 2 days of hectic training and even today was very hectic so I got a bit late it's almost 10:30 and we are starting the session right now जितने भी लोग अभी जुड़े हैं आप सभी को नमस्कार जय माता दी जय श्री राम हर हर महादेव let's start the session so how was training in last 2 days जितने भी लोग अटेंड किए थे if you are watching do let us know live comment करिए ताकि जो लोग नहीं जुड़े थे उन्हें भी पता चले whatever has been your feedback you can share it live okay चलिए good evening बहुत इंटरेस्टिंग बाज़ार है और 2-3 दिनों में और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैनी पीपल आर wondering what to do in the markets. Many people bought the lows of last week and they are enjoying the profits. Many people are shorting and they are suffering. So क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. Let us start this session. Excellent program, Ramesh ji. Thank you so much. I hope it was beneficial to you. Very good. Thank you, Sudha ji. Bhupta ji, thank you. Training was superb. Chaliye, good. Okay, so right now US markets are trading positive. S&P 500 is up by 10 points, Nasdaq is up by 1% and European markets are trading almost up by 1%. So overall we can see that the equity markets are pretty much trading in green. There is no problem whatsoever. Everything is nice, healthy, positive. सो क्या ये बाजार रिवर्स हो चुके हैं क्या बेयर मार्केट खत्म हो चुका है लेट अस डिस्कस ऑल दोज थिंग्स ऑलराइट सो लेट्स start the monthly time frame analysis first because tomorrow is 31st of May and tomorrow is the monthly candle closure date for the month of May. So right now US market is making a very nice bullish pin bar sort of a candle. It's not exactly a pin bar but it's fair enough. I would say fair enough and I think even it will hold these gains for a couple of days and probably settle this candle with a long tail. Now, this candle in itself doesn't mean anything. Why? Because there is no major support as such over here. It was just a psychological support of 4,000 level, and then there is a resistance overhead at 4,300. So जब तक ये 4,300 को क्रॉस नहीं करेगा on the higher time frame, on the bigger time frame, we are in this sort of a bear market. So हो सकता है कि इस समय बाजार थोड़ा ये और ऊपर जाए and probably then it might take a resistance and then start the next leg on the downside. So last time we had called off that above 4050 4075 S&P 500 में तेजी आ जाएगी. क्यों तेजी आएगी? Let us see the daily chart. So if we look at the daily chart and just zoom out, what we will see is last time 4000 के नीचे यूएस मार्केट ने एक शानदार एक सेलिंग एक और सेलिंग यहाँ पे हुआ था दैट वाज ऑन प्रीटी लो वॉल्यूम्स and then we got a very nice reversal. So this were sign that some positivity can come and this was the last swing high. So once this is taken out it is a bullish reversal. Now I think this market has a fairly good support at 4100. I think 4100 अब नहीं टूटेगा and it should eventually go till 4350 4320 and probably test the 200-day moving average over there and then the next big drop should start towards 3400 level which should continue in the month of I think July and August. सो मेरे ख्याल से अभी पॉजिटिविटी है और अभी मार्केट जो है यूएस मार्केट बाय ऑन डिप है कोई भी करेक्शन आता है यू कैन बाय द मार्केट एंड वी शुड हेड टुवर्ड्स 4320 अपॉन हिटिंग ओवर देयर वी शुड गेट अ नेक्स्ट लेग ऑफ ड्रॉप. ठीक है अगर नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक जो है 12,800 के लेवल पे आ चुका है. नैस्डैक में 11,500 से लेके 12,800 ये लेवल की हमने जो डिस्कशन की थी फ्राइडे. इट ब्रोक थ्रू दिस रेजिस्टेंस
and very nice. अब Nasdaq जो है पॉजिटिव है, and probably today the IT index rallied because Friday the Nasdaq broke through this resistance of 12,200, 12,300. So this was the resistance, and we made a very nice false bottom over here, and we have got a very nice surge. So I think Nasdaq जो है अभी bullish है, और 13,400, 13,350 बेयर मिनिमम आना चाहिए. So Nasdaq still has 5 to 800 points upside. I think ये गेन्स सही होंगे, ये गेन्स जो है मटेरियलाइज होंगे. Let's talk about some currencies. European markets, they are also staging a bounce, but overall these markets are in a long-term bear market. So these are just temporary technical bounce back to negate the oversold readings in the market. So if we have a look at the currencies, let's say the US dollar. Now US dollar is standing at a very precarious situation, because US dollar may we need a continued sell off, and I believe US dollar is going to do that continued sell off because it has broken this support. So last week I was watching for this support. It was the last price pivot here before making the new all time high, and we are breaking below that. So till we are below this zone, US dollar में pressure बना रहेगा, and because of which the equity markets will feel healthy, and the equity markets can rally. Now if at all suppose US dollar somewhere down the line से जाके अगर वापस pull back करता है, I think that will be very dangerous situation for the equity market. So the equity market bulls must pray that the US dollar does not bounce back, and it holds this resistance after having broken this resistance, and it keeps going lower. Okay. Now one interesting thing which I would like to see in coming days is that, how much the equity market rallies given the US dollar has broken down. कहने का ये मतलब है कि अगर यूएस डॉलर में एक कंटिन्यू डिक्लाइन हुआ, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अगर होता है, उसके मुकाबले अगर इक्विटी मार्केट अगर बहुत थोड़ा रैली करते हैं, देन दैट वुड मीन अ प्रॉब्लम फॉर अ मार्केट इन द मीडियम टर्म. सो आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो है अगस्त महीने में हमें देखने को मिलेगा, and I think there will be a bigger sell-off if such a situation arise where the US dollar falls significantly, but that does not translate into a significant rally in the equity market. Okay, so let us see. As of now, equity market जो है bullish है short term में, bearish है mid term to long term it's bearish. ये मेरा एनालिसिस है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरो यूएसडी एंड ब्रिटिश पाउंड. सो यूरो में बाय डिफॉल्ट बुलिशनेस होगा, क्योंकि अगर डॉलर वीक है तो यूरो में जो है आपको देखने को मिलेगा, बट यूरो इज सिग्नलिंग दैट इट इज रीचिंग अनदर सेट ऑफ अ रेजिस्टेंस. सो अभी कोई भी ट्रेड नहीं है करेंसी में, and I would like to watch for at least 2 days, maybe tomorrow and day after tomorrow, to see how the euro takes resistance at these levels. सो दिस वाज द लास्ट ब्रेकडाउन एरिया. अगर यूरो यहाँ से वापस से इस तरीके से रोल डाउन करता है, तो हम यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर पे फुल फ्लेजेड शॉट मारेंगे for a significant downside correction. Now I believe there is a very great chance that this thing will roll over down. I think Friday is the non-farm payroll data, so till Friday we might hold, we might distribute, but I think there is going to be a crack in the euro and the British pound, and the US dollar might again resurface on the bullish side. So देखना होगा, अभी कोई ट्रेड नहीं है, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में हम चलेंगे. यूरो अभी बुलिश है, और यूरो अभी और ऊपर जाना चाहिए, इनफैक्ट जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश पाउंड. तो ब्रिटिश पाउंड भी आज ऊपर है, एंड ब्रिटिश पाउंड भी जो है एक रेजिस्टेंस को आज ब्रेकआउट कर रहा है. सो आई थिंक ब्रिटिश पाउंड विल आल्सो गो हायर, and then later on it will roll down. So that is my bet, that British pound is bullish right now. It will go a little higher, and then again it will roll down. So there's no need to short all these currencies at the moment. Give them some time, and probably in a few days time हमें जो है इनमें बेहतरीन एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिलेगा. ठीक है. नाउ इंटरेस्टिंग, यूएसडी जेपीवाई जो है ये आज कुछ ऐसा कर रहा है जो कि मार्केट में गड़बड़, सडन गड़बड़ जो है पैदा कर सकता है. सो इट इज स्टिल इन कंट्रोल, बट अगर ये वापस से बुलिश होता है तो आई थिंक देर इज गोइंग टू बी सम क्राइसिस. नाउ द यूएसडी जेपीवाई हैज सक्सेसफुली ब्रोकन बिलो दिस लेवल, and this was nothing but a head and shoulder reversal pattern. Now, after having
uh, after having broken this, USD JPY is trying to again come back. आप देख सकते हैं कि ये एक sort of एक declining wedge टाइप का पैटर्न बना के ये रेडी है अब. If it comes back again, if it lodges itself back again in this territory, what can happen is it will start to move very very higher. Okay, am I audible enough? Somebody is messaging that the voice is not coming. So if the USD JPY, and we already have a very similar double top over here. Now, generally, I don't like such structure having a very similar double top or a similar double bottom, because essentially they are a sign that market will break them for once. Okay, so I think I'm not audible because audible. Okay, so where was I? Yeah, so yeah, so this is one thing which I'm keeping an eye. एंड राइट नाउ अगर मैं एक ऑब्जेक्टिव ट्रेड के परस्पेक्टिव से कहूँ तो जो हमारा JPY INR पेयर है फ्यूचर्स में, जून कॉन्ट्रैक्ट, सो आई थिंक दैट इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. 61.35 के आसपास ये मुझे एक इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर ये ऊपर चलना शुरू किया तो जो JPY INR पेयर है ना, ये फिर नीचे जाना शुरू करेगा. सो देर इज़ अ वेरी गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट आज मैंने इसमें जो है एक शॉर्ट मारा भी था, बट मैंने किसी को दिया नहीं था. इट वॉज अ प्राइवेट ट्रेड. So this was a very nice 20 paise trade, because intraday the USD JPY started to move higher. So we will see how things pan out. Once we break the 60.80, there is no looking back, and again it will go below 60, 59.5, maybe 59. Okay, so it all depends on this chart. It is very interesting क्योंकि नॉन फार्म पेरोल आने वाला है, और अगर ये वापस से बुलिश हो गया, देन आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इक्विटी मार्केट्स. और अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, सारे इक्विटी मार्केट्स जो हैं ये रैली करेंगे. S&P 500 कैन वेरी इजली मूव टुवर्ड्स 4350, जहां पे उसका 233 मूविंग एवरेज रीटेस्ट है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन वेरी इजली. लेट्स सी how things pan out. So that was an update on the currency market. अब बात करते हैं commodities market में, जहाँ पे crude oil को पहले डिस्कस करेंगे. Crude oil is moving higher intraday right now. It was bearish in the afternoon. इस पे मैंने जो है एक short trade दिया था crude oil में, which was working, and now I think crude oil has given some intraday breakout. Yeah, crude oil has given intraday breakout after spending entire days इन अ साइडवेज एक्शन. तो पूरा दिन ये साइडवेज था, और हमने जो है यहाँ कहीं इसको शॉर्ट किया था. थोड़ा बहुत इसमें डाउनफॉल आया था, बट आई थिंक नाउ इट इज ब्रोकन आउट. ओके, so all those people who are holding crude oil shorts, we will see what to do just before the closing. अगर ये डे हाई पे क्लोज होता है तो शॉर्ट्स को नहीं कैरी करना है. कल हम वापस से इसे शॉर्ट में ट्राई कर सकते हैं अगर कल वीकनेस हुआ तो. नाउ what is the significance of this level? The significance is that it has multiple resistances. So this is entire a supply zone based on horizontal, based on Fibonacci, based on the pitchfork. So this is filled with lot of supply, but if the price is not supporting the short trade, there is no point in holding on to it. So the short trade is very nice. We will see what to do. जितने पुट ऑप्शन जिन्होंने खरीदा है, आप पुट्स को कैरी कर सकते हो. फ्यूचर्स में काफ़ी रिस्की हो जाएगा, बिकॉज इफ इट ब्रेक्स हायर स्ट्रेट अवे ये $122 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है. सो डोंट टेक चांस. हाँ, अगर क्लोजर के पहले 11:30 के पहले थोड़ा और नीचे ये क्लोज होता है, आपके कॉस्टिंग के नीचे क्लोज होता है, तो फिर आप कैरी कर सकते हैं. ठीक है, सो इस बात का जो है ध्यान दें. जो लोग क्रूड ऑयल अभी ट्रेड कर रहे हैं, यू नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट आई सेड जस्ट नाउ. ठीक है, सो दिस वाज द मॉर्निंग हाई. इफ वी अगेन कम बैक हियर एंड क्लोज, फैंटास्टिक, उसको आप रख सकते हैं. और अगर ये नीचे नहीं आता है, लाइक इफ दिस इज this can be a breakout failure. Okay, if this doesn't turn out to be a breakout failure, then you shouldn't carry. You can carry the put options, but don't carry the futures. Futures में फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा. वैसे यहाँ पे अगर क्रूड बेरिश होता है तो फिर ये बहुत बड़ी गिरावट भी करेगा. ओके, सो लेट्स सी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट. लेट्स टॉक अबाउट द अदर कमोडिटीज. सो एक बार हम चेक करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस में इस समय 678 पे ट्रेड हो रहा है. आई कैन सी नेचुरल गैस trading at 678. Let the chart of natural gas. Yeah,
So, natural gas last week, it briefly made a high of around 720, and then natural gas has fallen down. I think natural gas may, uh, there is still some room to go on the higher level, but right now I think there is a short trade. So, natural gas right now trading at 678. This is a pretty much strong resistance. So, मैं समझता हूँ natural gas में अगर आप 700 को आप अगर कंसिडर करते हो तो होल्डिंग 700 नेचुरल गैस कैन ड्रॉप वेरी इजीली टू 635. बट अगेन इट्स वेरी रिस्की. इट्स लाइक काफ़ी ये थोड़ा शेडी ट्रेड है. मैं समझता हूँ कि आज इसको हम रहने देते हैं. लेट्स सी टुमारो. इट्स अ गुड ट्रेड बट ओवरनाइट रिस्क है. अगर ओवरनाइट कॉमिक्स में ये थोड़ा भी ऊपर क्लोज हुआ तो कल सुबह ये गैप अप कर देगा. सो यू माइट बी ट्रैप्ड वेरी बैडली. इस समय 678 चल रहा है. अगर ये 30 रुपये ऊपर खुला तो फिर हम फंस जाएंगे. So that is why I think let's wait for some clear cut opportunities on natural gas. Now let's talk about copper. So copper में मैंने जो है एक short दिया था आफ्टरनून में. That short was still working but again it is closing at the highs. So copper पे भी ध्यान देंगे. अभी ये थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट में है. More or less cost to cost आप कह सकते हो. So if it doesn't closes below like 777 kind of level, just exit at cost. हम कल देखेंगे. कॉपर में दोस्तों अगर इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करता है 785 786, if it doesn't cross this level, then copper will fall significantly towards 750. So that is the short trade over there, but don't carry if prices are closing at days high, because that is not a sign of weakness, that is a sign of strength. So we can very well ignore, like we can mitigate the risk by not taking the trade or by just coming out of the trade. And tomorrow morning, if everything looks good, if there is a sign of weakness, we can again short the same stock, and pretty much हमें same price ही मिल जाता है. So that's the approach that we will like to follow for copper. Copper must close below 777 or at least 778, 778, 778 and a half. तभी कैरी करना है, नहीं तो कैरी मत करना, थोड़ा रिस्की है. So yeah, so that would sum up the commodities analysis. Gold और silver इस समय bearish हैं. कोई great bearishness नहीं है, but gold में ऐसा है कि gold अगर 51,500 को क्रॉस नहीं करता है, so gold can fall all the way till 49,500. I believe gold में इस week बहुत बड़ी मूव आने वाली है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है. And gold will either we will see gold at 49,400 or we will see gold at 52,000. एंड राइट नाउ इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर. तो मुझे लगता है कि कल और परसों ये दोनों दिन गोल्ड एक छोटे रेंज में ही चलेगा, एंड देन ऑन फ्राइडे it will start to give that breakout mode. So if you are stuck in any gold trade, try to exit. It will trade in some small range, and then Friday or maybe on Wednesday we will see what to do fresh. तो अगर आप शॉर्ट हैं तो आप 51,500 का रेफरेंस लेके चलिए. इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, जस्ट एग्जिट द ट्रेड. कोई ट्रेड यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, because we are either going 52,000 or we are coming 49,500 and we are exactly at the center. So the odds are like 50-50. So there's no need to take a fresh trade. If I talk about silver, 61,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है और सिल्वर भी बेरिश है. बट अगेन सिल्वर अगर थोड़ा और ऊपर होता तो शॉर्ट ट्रेड देना आसान हो जाता. इस समय कोई भी ट्रेड नहीं है कमोडिटीज में. Bitcoin and Ethereum, they have bounced back very nicely. Bitcoin is trading at 31,000 level. आज का जो प्राइस एक्शन है ये तो काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा है. इट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस लॉन्ग रेंज, बट आई वुड स्टिल वेट बिकॉज बिटकॉइन कैन वेरी इजिली डॉज अस. सो बिटकॉइन जो है इस तरीके से ऊपर जाके इसको टेक आउट करके वापस भी गिर सकता है. सो लेट अस वेट ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम. आई थिंक पेशेंस विल पे ऑफ ओवर on these two cryptos. Let's talk about Nifty and Bank Nifty. So यहाँ पे क्या हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, let us see. So Nifty has bounced back in last 3 days, and I can see three consecutive white bars, just like we had three consecutive white bars over here, and we have filled the gap. So last time जो है 16,700 के आसपास जो है ये resistance था, sorry ये support था, and that left a gap and markets fell another 1,000 points. Right now we have filled this gap. Now many people they start to short the market
despite seeing that the market has opened gap up. See, don't short these markets just because you want to short. ठीक है, हम भी फ्राइडे को शॉर्ट करके गए थे, बट ओपनिंग में जो है 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। उसके बाद डोंट डू एनीथिंग। इफ यू ओवर ट्रेड, मार्केट आपको किल कर देगा। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट द मार्केट जहां पे आप ओवर ट्रेड अफोर्ड कर सकते हो। यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी। इफ योर ट्रेड इज नॉट वर्किंग, बुक द लॉस, बाहर निकलो, अलाउ सम टाइम टू द मार्केट, और मार्केट आपको देगा चांस। देयर इज नो नीड टू वरी। ओके, आप हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि ये जो बाजार है दोस्तों, ये टेक्निकल मार्केट है। ये जो बाजार था, ये टाइम पास मार्केट था। सो इन दिस टेक्निकल मार्केट, if you plan your trades carefully, if you remain patient enough, if you don't waste your money on taking silly trades, you will be rewarded ultimately. Correct? So right now, what I can see this market can go another 200 points. So 16,800 is the actual level, which is quite interesting to me. Even this level is a significant resistance level. So there is a band 16,685, 16,880. ये जो 200 पॉइंट का बैंड है, this is where the bears would like to come back. But एक चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे, जैसा मैंने थर्सडे के दिन कहा था कि आई वुड हैप्पीली लाइक टू मिस दिस एंटायर मूव, चाहे इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, या इतना बड़ा हो। ठीक है, आई वुड हैप्पीली लाइक टू मिस दिस मूव। वाई? बिकॉज आई हैव कैप्चर्ड दिस, दिस, दिस एंड दिस। ओके, now why I would happily like to miss this move? Okay, because it is very uncertain and it is very difficult to understand कि ये bullish है कि ये bearish है। Now some people are bullish, and if market turns bullish, they mistake it for they mistake luck for talent. So I don't want to be a victim of that. I want to be sure of what I do in the market. So if I am unable to read the market, I will not put my views on the market। ठीक है, सो इसलिए हम जो है बैकफुट पे रहेंगे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, जब फ्यूचर में जो चीज़ होने वाला है वो जब होगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं खुश हूं कि मैं इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। ओके, देयर इज अ रीजन आई एम सेइंग। नाउ द रीजन इज दैट this double bottom is a very shady double bottom। Okay, and markets can either choose to keep moving higher, or they can fumble anytime from all of these resistances। तो हो सकता है यहाँ से हो जाए, हो सकता है 16,800 से हो जाए, हो सकता है 17,200 से भी हो जाए। इस वीक की ट्रेनिंग में हमने निकाला है कि 17,200 इज अ वेरी critical level for this market। It's a hidden market। Now, the way these rallies have unfolded in last training, I have showed the students कि ये कहाँ जाके पीक करता है। देयर इज अ सर्टन मैथमेटिकल रिलेशनशिप where these rallies are going to peak। Now if that same funda is about to happen, then we are looking at Nifty somewhere near uh, just under 18,000 level। Okay, so there's lot of uncertainty। हम मार्केट को समय देंगे, हमें जब मार्केट इजी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, तब हम ट्रेड करेंगे, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट। तब तक के लिए नो ट्रेड। So right now I think the market is bullish, but you can't trust this market। Okay, so हम कोई बड़ा व्यू नहीं लेंगे, हम रोज मॉब लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेट्स सी कपल ऑफ डेज, हो सकता है हमें जो है कुछ और क्लैरिटी आ जाए, एंड देन वी माइट फ्रेम अ बिगर व्यू। राइट, सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि इस समय हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वी आर आइदर वी हैव लाइक स्टार्टेड दिस बिग मूव, और वी आर स्टिल going to do this move to complete the exact full and final target। ठीक है, तो जब तक मुझे बड़ा पिक्चर नहीं समझ में आता है, आई डोंट फील कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग द मार्केट। All right, so either we are going to do this, and I have explained in last training where will be the exact bottom। So either we are going to do this। Okay, take a average value पे एक resistance लेके इस तरीके से, या फिर probably we might go much higher just like these, and then we will see what happens। But yes, this is highly questionable। दिस इज वेरी वेरी क्वेश्चनेबल, और ये मैं फ्यूचर में बताऊंगा जब हम आइदर वी विल बी हियर और वेर एवर। तो ये फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चीज़ जो है ना बहुत ही क्वेश्चनेबल था। ठीक है, सो इस समय कैसे फिर हम मार्केट को ट्रेड करेंगे? सिंपल है,
कोई टेंशन की बात नहीं। फॉर टुमारो, ओके, फॉर टुमारो टुडे एफ जो है इन्होंने बाय फिगर शो किया है। जब भी एफ बाय फिगर शो करता है 2 दिन, तीसरे दिन से मार्केट का रिवर्सल हो जाता है, मार्केट स्टार्ट्स टू फॉल। सो डोंट टेक एनी पोजिशनल व्यू, आई वुड से कीप योर माइंड ओपन and take one day at a time. Do this for next 5 days, and after 8th of June, we should be in a better position to think in terms of the bigger trend. So right now मैं समझता हूँ कल के सेशन के लिए हमारा जो मॉब लेवल होगा ये बहुत ही सिंपल है, इट इज 16,680. So for tomorrow's session, the mob level is 16,680. If we are trading above this, we will hit 16,880 and then 16,950. Now एक और पॉसिबिलिटी इस समय मार्केट में क्या है, लेट मी जस्ट राइट द लेवल्स, फिर मैं बताता हूँ कि एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो मॉब लेवल इज 16,680 विच इज प्रीटी मच टूडेज हाई, एंड उसके ऊपर 16,880 एंड 16,950. दीज आर द two targets. On the downside, if we don't cross this, then tomorrow we might fall and we should fall towards 16,450 and then 16,380. ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं नीचे में. अब सिचुएशन सिनारियो एनालिसिस, अगर कल आज के हाई के ऊपर गैप अप होता है, दैट इज सिचुएशन नंबर फर्स्ट. अगर आज के हाई के ऊपर यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर गैप अप होता है, ठीक है, then remember one thing, till that gap is holding, don't short the market, okay. And if prices after completing these levels, if they are breaking this gap, especially in the second half, then it's a full blown short, so you can create a short trade, okay, and whatever high is made, that will be your stop loss, and all these targets will come like a waterfall decline. ठीक है, सो अगर कल गैप अप होता है आज के हाई के ऊपर या आज के हाई के आसपास भी अगर गैप अप होता है, तो पहले कोई भी शॉर्ट नहीं करना है, लेट द मार्केट मूव हाइयर. शॉर्ट तभी करेंगे जब या तो बाजार ये टारगेट्स के आसपास कुछ आएगा, लाइक 16,900 के आसपास आएगा, वीकनेस दिखाएगा, ओके, तब शॉर्ट करेंगे, या फिर मार्केट एक तरीके से गैप अप एंड रिवर्स, अगर ये चीज होता है गैप अप एंड रिवर्स, तब हम शॉर्ट साइड में आएंगे. ठीक है, सो याद रखना, थीम को याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है. कल का दिन और परसों का दिन, ये दोनों दिन जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. ठीक है, सिनेरियो नंबर 2, व्हाट इफ टुमारो देयर इज अ गैप डाउन ओपनिंग. सी, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है, एक मार्जिनल गैप डाउन होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं, मार्जिनल गैप डाउन होता है, सो आई थिंक वो इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, एंड मार्केट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड. व्हाई? Because inherently market right now is in a strength mode. So even if there is a even if there is a gap down, even if you are pushing it down, it might not go to fill the gap. I think वो इस कैंडल के बॉटम पे आएगा, मे बी इसको थोड़ा सा फ्लश करेगा, एंड अगेन इन द सेकेंड हाफ इट विल ट्राई टू गो हायर एंड क्लोज एट द डेज हाई. ओके, सो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रख सकते हैं. एंड तीसरा सिचुएशन, अगर फ्लैट खुलेगा तो एकदम लेवल के हिसाब से हम कल काम करेंगे. सो दैट्स द प्लान फॉर टुमारो. अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पोजिशनल बिगर व्यू. हमारा जो लास्ट टाइम का व्यू था मार्केट क्रैश का, वो सब एकदम सटीक हुआ है. इस समय हम मार्केट को थोड़ा समय दे रहे हैं ताकि मार्केट जो है हमें एक क्लैरिटी दे दे कि किस टाइप की मूव्स हो रही हैं. नाउ बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी हैज रैली ट्रिमेंडसली वेल, ऑलमोस्ट 10% की रैली हो चुकी है, एंड द शॉर्ट कवरिंग हैज हैपेंड जस्ट बिफोर द आरबीआई पॉलिसी. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लोगों ने अपने शॉर्ट्स को क्यों कवर कर लिए. ठीक है, नाउ वी हैव क्लोज अबाउट द 233 मूविंग एवरेज एंड द 65 मूविंग एवरेज. Now this is a good sign, but moving averages are lagging indicators, so इनका actual effect काफी दिनों के बाद होता है. ठीक है, now यहाँ पे today we have taken a resistance and made a black candle. Okay, now generally we have seen that after every two white candles there is a black candle. Okay, generally we have seen that whenever there are couple of white candles, then we have a selling. इवन अगर आप निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखोगे तो हर दो वीकली बुलिश कैंडल के बाद तीसरा जो है वो बेरिश कैंडल है. ओके, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसलिए मैंने कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे पास जो मैं बताऊंगा आपको. सो इफ यू चेक द निफ्टी weekly chart, you will see that every two white candles are followed by some sort of black candle. Okay, every two white candles should be followed by
वन ब्लैक कैंडल। ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ था, वो इस बार, when there was a pullback rally which was heading towards the top. Okay, so except this, if you see the entire rally that started somewhere from here, like last budget day के बाद से, every two white candle is followed by a black candle. Every two white candle followed by a black candle. You can count and you will see 90% of the time this behavior has worked. Okay. Now don't get bearish just because there were two white candles followed by a black candle. You should just keep these things at the back of your mind so that you don't get carried away in this market. What is more important is not to get carried away, not to get carried away with the bears and neither with the like bulls. बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी में आज जो है एक बेरिश कैंडल बना है, एंड आई बिलीव बैंक निफ्टी till it is above 35,680 or let's say 35,600, I think bank nifty is bullish, but in a range. So क्या range है वो, let me open the इंट्राडे चार्ट एंड लेट अस डिस्कस. सो बैंक निफ्टी में दोस्तों कल के लिए जो मेरा मॉब लेवल होगा, दैट विल बी टुडेज गैप. सो आई थिंक बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा केयरफुल कल रहना है, बिकॉज आई थिंक दोनों साइड कल मर्डर होने वाला है. सो आई थिंक फॉर टुमारोज सेशन यू हैव 35,600, you can say 600, 580. This is the mob level. This is a support that I'm looking for bank nifty. Bank nifty from here should go towards 36,200. नाउ इसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूं अभी के लिए. आई डोंट सी बैंक निफ्टी अबव 36,200. एट बेस्ट tomorrow we might see a range between 35,600 to 36,200. Okay, and close somewhere in this big range. Then on Wednesday we might see a proper trend. Okay, so this bank nifty till 36,200 is not crossed. It is still vulnerable, but it needs to close below 35,600. Once we have closed below 35,600, that would mean that the candle which closed above the 233 moving average, that was a false up move, that was a false closure, and this would force the market to go again down. And on the downside, we can clearly see there is a pending gap here. So on the downside, we will have 35,200 as the first target. So on the downside, 35,200 as the first down, the gap filling, and then you have 34,950. Okay. So for tomorrow, I think we are going to trade 35,600 se leke 36,200. Again, there must be selling and a closure somewhere here. And then on Wednesday, there will be a decisive move. Okay. So let's see. It is very interesting. Bank Nifty is indeed very interesting. And 35,600 ke niche, it is a proper bearish market again back to 35,200 and 34,950. So that's all for tomorrow's session on Nifty and Bank Nifty. एक दो दिनों में जो है मार्केट बहुत ही अच्छा एक पिक्चर हमें दिखा देगा. एक दो दिन में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव द मंथली क्लोजिंग कैंडल्स, एंड वंस द मंथली कैंडल इज क्लोज्ड, it will be very easy to predict the June month trajectory. Okay, so let's wait for 1 day or 2 day and we will have the roadmap for next month. So that's all from my side on index analysis. अगर कोई stock queries है जो कि मैं समझता हूँ बहुत होंगी, तो we can discuss the stocks. दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. And I don't see any stock queries, so I think we can wind up. Reliance. Okay, so there is a query on Mahindra and Mahindra. M&M. So M&M has given a breakout. Okay, M&M has given a breakout, so you should book your profits. There's a big volume candle. कल मैंने ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया है क्या करना चाहिए जब ऐसे कैंडल और ऐसे वॉल्यूम्स बनते हैं. So tomorrow, if you get any up move, just book it for the
मोमेंट, लेटर ऑन हम वापस बाय कर सकते हैं। अगली क्वेरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अगेन रैलीड। एज ऑफ नाउ मैंने कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं किया है, हालांकि प्राइस बहुत भाग चुका है। अभी तक मैंने कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं किया है और मैंने पर्पसली नहीं किया है। सो राइट नाउ इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग्स, आई थिंक 2700 आ सकता है, 2700, देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस ओवर देयर। सो वॉच आउट फॉर 2700, okay, and it will be very interesting to see how Reliance negotiates with 2700 and whether it comes back again or not. So longs के लिए 2700 एक रेजिस्टेंस है, उस पर जो है आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यूपीएल। नाउ यूपीएल has bounced today, very good inside bar at the previous support 233 moving average, and today's move is nice, but there is no commitment. So यूपीएल को मैं कैसे देख रहा हूँ? मैं यूपीएल को इस समय कहीं नहीं, न्यूट्रल, देयर इज नो ट्रेड, नथिंग। अगर आप तेजी साइड में है, लॉन्ग में है, तो प्रॉफिट बुक आप कर सकते हो। जहां तक मुझे लगता है यूपीएल शुड अगेन फॉल बैक एंड वी विल गेट अ ट्रेड लेटर ऑन। ओके, यूपीएल ऐसे सिचुएशन में है कि जब तक ये 845 के ऊपर नहीं जाएगा, it will keep dropping and it can very easily come towards 700 sometime in future. Okay, so we already have a declining structure like this, channelized structure, so we might do something like this in future. Okay, overall बहुत ही शानदार चीज है, राइट? तो इस तरीके से ये जो है चार्ट बन सकता है। या तो इस रैली में एकदम से और इसमें जो है स्ट्रेंथ है एंड इट बेटर टेक्स आउट ऑल दिस रेजिस्टेंस, और एल्स इट इज कमिंग 699 इन फ्यूचर। ठीक है, मेरा बेट है 80% चांस इट इज कमिंग हियर। टाइटन, टाइटन कंपनी लिमिटेड। So Titan is looking nice to me as of now. Titan is definitely clean, clear, bullish, and I think 2342 should come. So Titan में मैं समझता हूँ कि एक बार ये जो लास्ट ब्रेकडाउन एरिया है 2350, आई थिंक टाइटन डिजर्व्स टू रीच दिस लेवल। ओके, किसी को टाइटन अगर सपोज मार्केट गिरता है इंट्राडे या समथिंग, किसी को टाइटन अगर बाय करना है, आई थिंक आज का जो बॉटम है आई थिंक 2165, you can buy at 2165, keep stop loss of say 2100 और target होगा 2350. So I think this is a very nice trade, and you can take this trade. We have a 1 2 and third has started. I think this is where we are heading. Okay, so this is a very nice maybe potential channel in the making. So टाइटन पे मैं बुलिश हूँ। आप 2165 अगर मिलता है आने वाले दिनों में तो वहीं बाय करना। अगर ऑलरेडी आपने बाय किया है तो आई थिंक यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो 2100 रुपीज, प्रिफरेबली 2070, एंड टारगेट इज 2350 2342। यहाँ पे मैं समझता हूँ एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स द अपडेट ऑन टाइटन। GNFC, GNFC इज द नेक्स्ट क्वेरी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं हो रहा है। So GNFC is also bullish right now. स्टॉक 700 तक जा सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी बाइंग नहीं करना चाहिए। वाई? Because stock has not bottomed completely. So there is a risk that it goes higher, create a resistance, take a resistance, and then drop lower, and probably then bottom out sometime, something like this 1 2 3. सो थोड़ा सा सावधानी रखना, और आई थिंक 698 तक तो आना चाहिए। वहाँ पे आप एक बार जो है प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो अगर आपने नीचे से बाय किया। Now, one more thing, many people, I'm sure, they must have bought many stocks at very, very high level, and then markets tanked. Now, some people they exited probably because of their discipline or probably because they got liquidated. Now, many people they have not yet sold their stocks. Okay, there are many people. So you are getting this fabulous opportunity to again utilize and exit. If you fail to do that, I think you will have a very hard time in the August month. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने जब अक्टूबर से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अक्टूबर के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ तभी भी किसी ने नहीं सुना। फिर एक और रैली आया, सो दे थॉट दैट दे हैव गॉट द मार्केट, देन अगेन आई वांट, अगेन इट ड्रॉप, एंड अगेन इट बाउंस्ड, एंड अगेन इट हैज ड्रॉप। सो अभी तक तो सब सही हो रहा है। सो डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ मार्केट। मार्केट हैज़ अ वेरी peculiar way of hurting many people exactly at the wrong price.
at the wrong time. Pidilite Industry, as of now, let me check. Pidilite Industries. So last time आपको याद होगा, तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा था क्योंकि द वे इट हैड bounced from the lows, making a, overall, I'm expecting a very big falling wedge pattern, something like this. So I like this stock. Last time भी मुझे ये पसंद आया था यहाँ पे. So this stock is bullish at the moment. I think it can go maximum till 2280, which is 2300. You can probably book over there. These are filled with lot of resistances. I like this chart from a medium term perspective, which means that after this up move, we can again dip, and probably then we might break out from this stock. So it's a very nice chart from a medium term perspective. We will see, अगर भविष्य में हमें जो है ये बहुत अच्छा, अगर रोटेशन के बाद अगर हमें ये लॉन्ग साइड में मिलता है इवेंचुअली लाइक दिस, then definitely हम इसे buy करेंगे, because this stock will at least shoot 50% higher from the breakout point. So right now it's filled with resistances. 2280, 2300 is a resistance. Over there you should book profits, and then we can expect one more dip towards 2100 level. So that's the update coming on Pidilite. Next query hai Deepak Nitrite. See, I'm trying to take as many queries as possible, but okay. What about Deepak Nitrite? See, I like this chart. ये मुझे अब जो है पसंद आ रहा है, but the problem is, पसंद आ रहा है सिर्फ एक मूव के लिए. The stock has finally, broken below the moving averages in a convincing manner. I think this stock is going to have a hard time uh, under 2240. So मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस स्टॉक में जो है आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है. अभी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, मे बी 2126 यहाँ तक जा सकता है, मे बी थोड़ा सा और पुश कर सकता है 2240. बट जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, आई थिंक द स्टॉक इज गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अर्निंग्स भी आ रही है यहाँ पे नेक्स्ट वाली अर्निंग्स में. सो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप लॉन्ग साइड में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप रेडी रहो. 2126, 2200, these are the zones to watch out for. Okay, if the stock breaks above this, then I would be very bullish on this counter. Okay, why? Because see, it's a nice bottom. Then it will be proven that it's a nice bottom. We have one bottom here, we have second bottom here, and that flushed the bottom, right? So this will be a very nice proper double bottom structure, having gone higher than the 233 moving average, having negated the declining structure. So fantastic. फिर इसके बाद ऐसे जो stocks होते हैं ये फिर सीधे न्यू हाई की तरफ जाते हैं. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ इट नेगोशिएट्स एट 2200. अगर ये बुलिश होता है तो 2200 को ज़रूर काटेगा, अगर 2200 को नहीं काटता है तो फिर 1300 पे ये स्टॉक मुझे दिख रहा है. एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन जो स्टॉक्स में होंगे ना, दैट विल बी वेरी 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 ब्रूटल. टाटा केमिकल, लेट अस चेक टाटा केमिकल्स. So Tata Chemicals came very close to the 233 moving average, and then it has bounced. So again, these all these stocks, see, compare this with the current one. Last time these stocks had bottomed pretty nicely, and this time हर एक स्टॉक ने ना थोड़ा थोड़ा नीचे एक छोड़ दिया, एक चीज, एक गैप को. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी फिशी. ओके, दिस इज समथिंग विच इज लाइक यू कांट रिलाई ऑन दिस बिहेवियर. नेवरदलेस राइट नाउ जो है स्टॉक मैं समझता हूँ थोड़ा सा बुलिश है, and stock can go higher, but I am not expecting the stock to go above 1000. I think it is going to decline once again. But if I get this stock in next correction, if I get this stock at lower levels, say around 840, 820, and we hold this entire support zone, I will buy this stock. It will be very 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 bullish. It will literally double from 800 to 1600. So there is a bigger trade that is going to come in Tata Chemicals. In fact, there are many stocks, at least like 10 to 15 stocks, which will double, which will double in the coming 12 to 18 months. And they will double irrespective of where Nifty goes. Even if Nifty keeps trading in a 1000 point band,
these stocks will have a bull market of their own. So when the time comes, I will keep sharing one by one all these counters. अंबुजा सीमेंट, नेक्स्ट क्वेरी है अंबुजा सीमेंट, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। 400 के नीचे जो है ये काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आज इसने एक सॉर्ट ऑफ एक कंजेशन से एक जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश की है ना। सी आई लाइक दिस स्टॉक, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज स्टिल अंडर अ रेजिस्टेंस। ओके, सो that is what makes things little dicey. So मैं अभी इसमें ज़्यादा रीड नहीं करना चाहूँगा, अभी मैं इसे टाइम दूंगा। एंड इफ़ यू आर बुलिश, आई थिंक स्टॉक जो है 380 वगैरह जो है कर सकता है, 385 करना चाहिए। बट मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रीड नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू front run the stock thinking that okay ये bullish हो जाएगा, I don't know. So it is strong, definitely I like the chart structure, everything is fine. It even digested this big volume. uh, I think it's buying big volume, buying भी यहाँ पे ठीक है, सारी चीजें ठीक है। बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये स्टॉक क्या करना चाहता है, वेदर इट वांट्स टू मेक अ पेनेंट पैटर्न लाइक दिस एंड देन गिव अ ब्रेकआउट, और इट वांट्स टू, who the hell is this, or just a second, please don't call for training. कुछ लोग अगले ट्रेनिंग के लिए अभी कॉल कर रहे हैं, डोंट कॉल फॉर ट्रेनिंग। ओके, सो आइदर दिस इज मेकिंग अ पेनेंट पैटर्न फॉर अ इवेंचुअल ब्रेकआउट टुवर्ड्स न्यू हाइज लाइक दिस, और it has started a distribution, a smart distribution, where there is a positive news about the stock, about wholesale and the Adani and all these things. Probably it will trap retail people and then again crash towards the next earnings. ठीक है, so सावधान रहना। Let's wait for, let's give this stock some time. फिलहाल 385 390 आना चाहिए, it deserves 385 390 as at the moment. नेक्स्ट स्टॉक है सेरा सैनिटरी, इट्स अ वेरी नाइस स्टॉक, फेवरेट है इन्वेस्टर्स का सिंस मैनी 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 ईयर्स। राइट नाउ स्टॉक अपना बुल मार्केट कंप्लीट कर चुका था 6,500 पे, और स्टॉक बेरिश है। स्टॉक अधिक से अधिक जो है 4,650 तक जा सकता है। ओके, ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो अपने 200 DMA के नीचे सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, एनी मूव दैट कम्स यू मस्ट एग्जिट। नेक्स्ट क्वेरी है फेडरल बैंक, नेक्स्ट क्वेरी है फेडरल बैंक लिमिटेड, लेट मी सी। सो फेडरल बैंक इज अगेन बेरिश काउंटर, एंड अभी का थोड़ा टेक्निकल रैली है, सो आई थिंक इट कैन गो टिल 96। ओवरऑल आई एम बेरिश ऑन दिस स्टॉक। सो आई हैव डन अंबुजा सीमेंट। टाटा मोटर्स एक बार चेक करते हैं, टाटा मोटर्स पे क्या ट्रेड है। Looking, what is the, yeah, looking to short Tata Motors again around 448 with stop loss of 463, please suggest। Okay, no problem। See, uh, look at the chart, ठीक है, चार्ट ने सब कुछ बता दिया, इट्स वेरी सिंपल। इन दिस, एज पर दिस चार्ट, ओके, टाटा मोटर्स इज कमिंग टू फिल दिस गैप। सो टाटा मोटर्स जो है 474 तक तो डेफिनेटली जाने वाला है, 460 474। ओके, नाउ when can this bullish move, the seemingly bullish move, can become bearish? ठीक है, ये अभी जो स्ट्रेंथ है, देखो आप इसको ऐसे समझो, ये आपका सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस था, ये अब गैप अप से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब ये एक अनफिल्ड बिजनेस है और ये एक मेजर लेवल था, ये इसके अंदर जस्ट अभी जा रहा है। सो देर इज अ स्कोप फॉर इट टू ट्रैवल दिस मच। ठीक है, अब ये जो पूरा टेरिटरी है 445 से लेके 475, अब इसमें ये अगर वीकनेस करेगा, वीकनेस दिखाएगा, तब फिर शॉर्ट करने में मजा है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि इसने ये सारे रेजिस्टेंस कट कर लिए हैं, इट हैज स्कोप टू फ्लाई टिल 475। okay, so what it can do is it can invite in early shorters, trap them all the way till here, okay, and probably then drop, या हो सकता है शायद ड्रॉप भी ना आए। ओके, सो इस चार्ट को हम, अगर हमें ये चार्ट कुछ ऐसे दिखाई दे, ऐसे,
तो फिर हम इसे बाद में शॉर्ट करेंगे. सो आइदर वी विल शॉर्ट इट एट अ वेरी हाई लेवल टू गेट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और लेट इट मूव वेर एवर इट वॉन्ट्स, एंड प्रॉब्ली लेटर ऑन हम इसे शॉर्ट करेंगे. सो जल्दबाजी नहीं करना है मेरे ख्याल से. अभी इसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं है. अगर आपने किया है तो बी केयरफुल. एंड डाउन साइड में देर इज अ वेरी गुड सपोर्ट एट 405. अपोलो टायर्स, लेट अस चेक दिस स्टॉक. अपोलो टायर्स, सो अपोलो टायर्स में इस समय अगर आप लॉन्ग हैं तो आप निकल जाओ, ठीक है, बिकॉज कुछ है नहीं चार्ट में इस समय. लेट अस टेक अनदर क्वेरी. अंबुजा सीमेंट्स में ले चुका हूँ. आई कैन सी टाटा मोटर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. टाटा पावर एक बार चेक कर लेते हैं. लेट अस टेक टाटा पावर. So yeah, so Tata Power. So Tata Power again unfinished business left at the bottom and moving higher. I think it can go till 242, and there's no trade from my side. I think it's just a technical move till 242, 245. ये स्टॉक जो है ना ये मज़ेदार होने वाला है. आई एम टेलिंग यू. इसमें वेट करो. इसमें सही मौका जब मिलेगा तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक होगा. Okay, so if this stock goes at 242, 245, एंड यहाँ से अगर वापस से ये फंबल करता है तो आई थिंक मैं इसे यहाँ पे शॉर्ट करूंगा. लेट्स सी. अभी प्लान है, बट उस समय देखेंगे. वीकनेस जब तक नहीं आएगा तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट इज वेरी स्मार्ट. एवरी टाइम इट करेक्ट्स, ठीक है, एंड देन इट रैलीज इन अ बिग मैनर. तो आप बीच में नहीं फंसना है. यही तो मैं समझा रहा हूँ कि मार्केट ट्रिकी है. एंड टू एंड खेलना आसान है, बीच में आप खेल नहीं सकते इस मार्केट को. सो बी केयरफुल. फंसना नहीं. लॉस होता है, स्टॉप लॉस लो, बट फंसना नहीं. श्याम मेटल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेरी है श्याम मेटल्स. देखो स्टॉक डेड है. स्टॉक में कुछ रखा नहीं है. 290 का एक अच्छा सपोर्ट है. प्रॉब्ली इट कैन डू सम रेंज बाउंड मूव. सो अगर आप इसको लॉन्ग करके बैठे हैं तो ठीक है. आप जो है आपको 280 का स्टॉप लॉस लगा आप सकते हैं. एंड मे बी इफ इट गोज एट 360 यू शुड बुक आउट. टाटा स्टील. ओके, लेट अस डिस्कस टाटा स्टील. टाटा स्टील लिमिटेड. So Tata Steel, as of now, there's no trade. I think what it is doing is just doing time pass, and it will again pop up inside. Okay. Now कल ट्रेनिंग में मैंने टाटा स्टील ही लिया था, आपको याद होगा. एंड yesterday आई एक्सप्लेन्ड कि आज इसमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए. वाई this 1068 level is very crucial. Okay, and today also it has not yet crossed. Now look at this chart. अगर ये इसके ऊपर गैप अप करता है कल, कल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर गैप अप करता है कल, ठीक है, तो इसको आप बाय कर सकते हो. और आज के कैंडल के नीचे यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग है यहाँ कहीं आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. अगर ये ट्रेड चला तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू कैप्चर द ट्रेड टिल दिस गैप. ओके. इंट्राडे ट्रेडर्स इस कैंडल के ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुक आप कर लेना. एंड पोजिशनल तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा होल्ड करने का, बिकॉज यू मे नेवर नो, एक कैंडल अंदर लॉन्च करके अगले दिन ये ह्यूज गैप डाउन भी कर सकता है. सो इट्स ओनली फॉर इंट्राडे. पीवीआर. PVR has again bounced back again. 1860 and all these levels have come. Now this bounce is looking quite strong, but there are no volumes. So इस स्टॉक को अभी रुको ना. इतनी जल्दबाजी में क्यों हो तुम लोग शॉर्ट करने के लिए. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. ठीक है. these stocks are not going anywhere. लेट्स वेट. लुक एट द कैंडल्स. बैक टू बैक 3 बुलिश कैंडल्स हैं. पहले किसी में भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं दिखाई देगा. बुलिश कैंडल्स हर बार है. यहाँ पे 4 बुलिश हैं, यहाँ पे 3 है, बट दीज आर स्ट्रेंथ कैंडल्स. ओके, but these are short covering candles क्योंकि there are no volumes. These are short covering candles. If the candles are strong and the volumes are lacking from support, it's pure short covering. It's a trap. ये क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ. मान लो प्रमोटर को 500 करोड़ का माल डंप करना है. वो 100 करोड़ यहाँ पे खर्चा कर रहा है ताकि उसके लिए यहाँ पे कस्टमर्स मिलें. ठीक है. फिर वो क्या करेगा, उसी 100 करोड़ का कच्चे में शॉर्ट करेगा और अपने वाइट के उसको भी शॉर्ट करेगा और वो डबल पैसा कमाएगा. ठीक है. सो जो शेडी प्रमोटर्स होते हैं दे नो ऑल द वेज हाउ टू मेक मनी. इनफैक्ट दे मेक मोर मनी फ्रॉम शेयर मार्केट देन देयर एक्चुअल बिजनेस, एंड ऑल सच मनी goes out of the India. It is parked
in Swiss. सो इस स्टॉक को अभी मत शॉर्ट करिए, ध्यान रखो ये अपने जोन में आ रहा है, बट एक वीकनेस दिखे तब शॉर्ट करेंगे, ठीक है. सो दैट इज द एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव. मंथली कैंडल कल क्लोज तो होने दो, इट्स ऑल शॉर्ट कवरिंग. नेक्स्ट है इंडस इंड बैंक. इंडस इंड बैंक. इंडस इंड बैंक राइट नाउ आई थिंक इट कैन गो टिल 963. कुछ दिनों पहले भी हमने इसकी एनालिसिस की थी और एक सिंपल चीज़ हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ इन दिस चैनल एंड don't short here, let it travel back to the top of the channel and then you can short. So IndusInd Bank इस समय जो है थोड़ा सा बुलिश है, मुझे लगता है स्टॉक 950 980 तक जाना चाहिए. Infosys. Infosys and Wipro. So Wipro is my choice over Infosys. Yesterday in the training, we did a long-term analysis and we discovered that Wipro is a better choice from a safety perspective. Now Infosys में कल जो है हमने इसका भी केस स्टडी कल हमने स्टडी किया था. And what I had said to the students is that Infosys is right now bullish. It is going higher, but somewhere around 1580 1590 over there we will see फॉर सम वीकनेस. तो अभी ये तेजी में है, मैं समझता हूँ कि 1580 ये जाने वाला है निश्चित तौर पे, ठीक है. बट फ्रॉम 1580 बी बिकम वेरी केयरफुल बिकॉज देन इट इज फिल्ड विद रेजिस्टेंसेस. फ्रॉम 1580 टू 1635 इट्स ऑल रेजिस्टेंस. सो वी कांट से कि एग्जैक्टली कहाँ से ये फिर गिरेगा. ओके, राइट नाउ अगर आपने बाय किया है या अगर आपका पहले का पोजिशन है तो इस जोन में जो है यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट. और हाँ, जो लोग स्टॉक्स में शॉर्ट कर रहे हो ना, प्लीज़ बी एक्सट्रीमली केयरफुल. बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिकॉज मार्केट्स कैन टेक यू फॉर अ राइड. थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस को लगाओ. पेट्रोनेट LNG. सो वी आर अप्रोचिंग दी 1 आवर टाइम लिमिट. लेट अस सी, वी विल हैव टू वाइंड अप. पेट्रोनेट LNG दोस्त देखो अभी इट्स टाइप ऑफ अ मोमेंटमलेस स्टॉक. नथिंग मच इज देयर. कुछ नहीं है स्टॉक में. एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग हैं तो 204 रुपए का स्टॉप लॉस रखो और अगर 235 दिखता है तो प्लीज प्रॉफिट बुकिंग करो. देयर इज अ पेंडिंग गैप ओवर हियर, यू शुड बुक प्रॉफिट. क्रूड एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देखो. शुभम श्रीवास्तव, स्पैम मत करना नहीं तो बेटा ब्लॉक हो जाओगे. विप्रो, लेट अस सी विप्रो लिमिटेड. या विप्रो जो है आई लाइक विप्रो and yesterday I've explained in the training why I like Wipro. So Wipro में अगर अगली जो गिरावट आएगी तो मैं उसमें जो है बाय साइड में रहूँगा. इस बार मैं इसको बाय नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ फार ऑफ फ्रॉम द बॉटम. बट हाँ, नेक्स्ट टाइम में सपोज नेक्स्ट साइकिल में ये नीचे आता है तो हम इसे बाय करेंगे. अगर अभी आपने बाय किया है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 450 रुपीज एंड आई थिंक इट शुड गो 505. 505 रुपए आना चाहिए. इस कैंडल के ऊपर ये एक बार आएगा. भारती एयरटेल. भारती एयरटेल. नाउ पीपल आर आस्किंग निफ्टी बॉटम रेंज. निफ्टी बॉटम रेंज जान के आप क्या करोगे? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? निफ्टी बॉटम रेंज सपोज 14,800 है. हाउ डज how does it help you? Don't judge stocks with respect to Nifty. Okay, I think what people are mistaking here is people are thinking that Nifty bottom is maybe 15,500. कितना गिरेगा? 15,000 गिरेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. बट यू हैव नो आइडिया हाउ द स्टॉक्स विल बिहेव इवन इफ निफ्टी फॉल्स स्टिल हियर. अंडरस्टैंड दिस थिंग. स्टॉक्स जो हैं ये धज्जियां उड़ जाएंगी स्टॉक्स की, सेक्टर रोटेशन होने लगेगा. सो ये अगर कोई लॉजिक लगा रहा है कि 15,500 इज द बॉटम या 15,200 इज द बॉटम एंड यू आर प्लेइंग स्टॉक्स, if you are using this logic and playing Nifty, it is fine. If you are using this logic and playing stocks, then God bless you. सेम लॉजिक लोग अक्टूबर में लगा रहे थे. भारती एयरटेल, सी भारती एयरटेल right now can go little higher, but I am bearish on this stock later on. So I think भारती एयरटेल जो है ये जब तक 650 पे नहीं आएगा इसका बॉटम कंप्लीट नहीं होगा. सो राइट नाउ इट इज बुलिश. आई थिंक इसमें एक 15 पॉइंट्स का और अप मूव आना चाहिए, बट कीप एन आई नियर 715 720. ओके,
अगर यहाँ से ये गिरना शुरू करता है तो इट विल कम ऑल द वे टिल 650 660. Be careful in all these counters. They are not making a good quality bottom. I'm repeating again. Later on अगर ये यहाँ पे आए और आप इसमें फंसे हो तो आई थिंक ये फिर बहुत बड़ा गलती आप करोगे. सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन ऑल दीज स्टॉक्स. Their bottoms are fishy. Yes, they will go to some extent because market is in itself very oversold, so they will go little higher, but don't mistake it for say something like this. Okay, छोटा छोटा gains लो, positions को हल्के रखेंगे, and let us see. चलो आखिरी क्वेरी लेंगे आज के लिए. राइट नाउ मारुति सुजुकी. ओके, सो मारुति में यही प्रॉब्लम है कि मारुति इट्स नॉट गोइंग ऑन एक्सट्रीम साइड, इट जस्ट समवेयर इन दी सेंटर. सो अगेन मारुति जो है अभी 8000 पे आ चुका है. मारुति अगेन थोड़ा सा बुलिश अभी जाना चाहिए, बट जैसे ही बुलिश जाएगा इस तरीके का रेजिस्टेंस आ जाएगा. देन 8250 जाएगा तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ जाएगा. सो मारुति में देर इज लॉट ऑफ कचरा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर. सो 8250 यहाँ तक जा सकता है. यहाँ पे एक बार निकल जाना बहुत ही अच्छी बात होगी मैं समझता हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर मारुति. सो आई थिंक 8200 8250 यहाँ तक तो जाना चाहिए, बट वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो सही डिसीजन होगा. ठीक है, सो ये चीज़ है. HDFC बैंक को शॉर्ट करना है. ओके, HDFC बैंक को शॉर्ट करना है. लेट अस सी. शॉर्ट करना है तो विचार ठीक है, बट अभी लेवल नहीं आया है ना. शॉर्ट करने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन. अब ये HDFC बैंक है, एक तो पूरा गैप बाकी है. ठीक है, तो 1465 दिस लेवल has not been tested, so there is no question of shorting. It can very easily go through this gapping action at 1465. अच्छा, जो मैं निफ्टी के समय बोल रहा था कि एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मुझे अब याद आ गया, तो लेट मी जस्ट शेयर इट विथ यू. सो इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये मार्केट जो है ना इस तरीके से ये गैप अप में भी हो सकता है चलते चले हैं. रोज गैप अप करेगा, छोटा रेंज, एंड इट विल क्लोज अगेन गैप अप, छोटा रेंज, close. Okay, so this is one interesting thing that came to my mind, that this market is very smart. It knows how to confuse the people. So every rally it is choosing some script, and I think in this leg, if it doesn't stop at 16800, यानी ये जो रेजिस्टेंस है आप देख रहे हैं 16850, अगर यहाँ से ये यू टर्न नहीं ले रहा है तो ये निश्चित तौर पे वापस से ये जाने वाला है समवेयर 17800, और वो गैपिंग एक्शन ही करते करते लेके जाएगा. सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इवन इंडेक्स ऑन इंट्राडे बेसिस. ओके, कमिंग बैक टू दिस. आखिरी क्वेरी दोस्तों लेंगे. राइट नाउ लेट अस सी, मे बी अडानी एंटरप्राइज फॉर शॉर्ट. नहीं, अभी कोई स्टॉक नहीं है शॉर्टिंग के लिए. बात को समझो ना, अभी 2 दिन हुआ है मार्केट को बाउंस करके. थोड़ा रुको तो सही 1-2 दिन, अभी मंथली कैंडल रिपेयर होने दो. आरबीआई की पॉलिसी है, थोड़ा समय दो, जल्दबाजी क्यों करते हो. सो अडानी पोर्ट इस समय मैं समझता हूँ 768 पे जाना चाहिए. सॉरी, अडानी. ओके, यू आस्क्ड अडानी एंटरप्राइज. लेट मी टेक अडानी एंटरप्राइज. अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट जो है 768 तक जाना चाहिए. अडानी एंटरप्राइज देयर वाज अ मैसिव डिक्लाइन, उसके बाद में इसमें बहुत बेरिश हो गया, बट अभी इसमें ट्रेड मत करो, वेट करो. लेट्स वेट फॉर अपॉर्चुनिटी. इट कैन वेरी इजीली टच 2300. ओके, बट ये जो कैंडल है ना, इसने सारा राज उगल दिया है. दिस कैंडल हैज told a lot of secrets. So let's wait for right time. Hopefully we are going to get a big catch. We are going to get a big fish. So let's be cautious. Let's wait for the right time. सही टाइम पे जाल बिछाएंगे. ठीक है, अभी फ्रेश क्वेरीज मत पूछिए. लेट्स वाइंड अप करते हैं सेशन को. वी हैव क्रॉस्ड 1 आवर टाइम लिमिट. एंड कमेंट ज़रूर करिए. कमेंट आप करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी हाई होता है. बाकी यूट्यूब से हमारी कोई अर्निंग नहीं है, ना ही हम कोई ब्रोकरेज का लिंक नीचे छोड़ते हैं 2 रुपये कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. बट यस, योर कमेंट्स आर इनवैल्यूएबल, एंड फॉलो जो है आप करते रहिए इंस्टाग्राम वगैरह पे. नाउ दिस स्टॉक PEL, सी PEL इज अ बेरिश काउंटर. इट इज बाउंसिंग ऑफ जस्ट बिकॉज देयर वाज अ सपोर्ट. पूरी तरीके से बेरिश है. तो अगर कोई भी बाउंस आता है
try to exit from your long trades. It's a very sad stock. I think आने वाले 2-3 महीनों में आई थिंक ये स्टॉक कोविड बॉटम पे जाएगा. मुकेश जी का अगर हाथ रहा तो शायद बच जाएगा, बट हालत बहुत खराब है इनकी. इट इज it is almost guaranteed to go till 600. Be very careful. Right now 2000 level जो है आ जाएगा, but be careful. And if you can remind me, this can become our next big shot for the next round. ठीक है. So चलिए, let's wind up. I hope analysis useful थी, benefit होगा आपको. And comment ज़रूर कीजिए, like share subscribe करना ना भूलें. And tomorrow again we will meet. तब तक के लिए good night, take care, wish you all the best. जय माता दी.